सो वेलकम बैक टू इंडिया लैंडस्केप चैनल। और ये समर का टाइम है, तो ये देखिए आम के पेड़ में आम ही आम। तो ये समर टाइम में पंछियों के लिए कुछ अरेंजमेंट हमने कर रखा है। ये थोड़ा रोटी और ये पानी। तो आप भी ऐसे टेरेस पे पानी वगैरह रखा कीजिए समर के टाइम में, ये पंछियों को बहुत हेल्पफुल होता है। तो बैक टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे, लेट्स गो टू आवर बाइक। So this is our bike, the Versys 650। और इसका ये जो चेन है, दिस इज़ क्लीन बट दिस हैज़ बिकम ड्राई, सो वी हैव टू ल्यूब इट। और ये बाइक में ओनली साइड स्टैंड आता है, देयर इज़ नो मेन स्टैंड। सो विद द मेन साइड स्टैंड दिस इज़ इम्पॉसिबल टू rotate the wheel. So for that matter we have a tool with us, that is the moto jack। तो मोटो जैक को कैसे यूज़ करते हैं करना पड़ रहा है। तो मोटो जैक को कैसे यूज़ करना है ये आज हम करेंगे और टेस्ट करेंगे कि इसके साथ प्रॉपरली विथ ईज चेन ल्यूब हो पाता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। So as per instruction, there are two anti-slip rubber pads. The instruction is you have to place one rubber pad, anti-skid rubber pad under the side stand and another under this moto jack. Before that, we have to fasten the front brake with this velcro। ऐसे तो नहीं होगा। What is the right process, man? So I am doing it for the first time. I will learn with today, and I hope you people will also learn with me. We will definitely find a right way to fix it. So yes, now we have achieved the right process to fasten the brake with the help of this velcro, so that the bike doesn't roll over. One thing you have to be careful with is that इसके बीच में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो ये पूरा हाथ दब जाएगा उसके अंदर।
So this time we could successfully install the motor jack. अभी व्हील आराम से स्पिन हो रहा है। तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो एक्सपीरियंस होने के बाद ये हम और भी एफिशिएंटली कर पाएंगे। और एक ये जो नीचे का जो फ्लोर है वो थोड़ा सपाट नहीं है, इसको सपाट इवन फ्लोर में करना पड़ेगा। ये थोड़ा ऊंचा नीचा है, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इससे पहले मैं चेन ल्यूब करने के लिए मोटूल का चेन स्प्रे यूज करता था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हो जाता था व्हील में दूसरी जगह में। वो न्यूज़पेपर उसके अंदर डाल के बहुत केयरफुली करना पड़ता था, उसके बाद भी बहुत जगह वो ल्यूब लग जाता था और वो काफी स्टिकी हो जाता था। इसके बाद मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये ड्रॉप वाला चेन ल्यूब, जो कि मुझे थोड़ा कन्वीनियंट हो रहा है। और ये जो चेन ल्यूब है ये थोड़ा थिकर भी है मोटूल के चेन स्प्रे के मुकाबले। सो दिस इज कीपिंग माय चेन lube for a longer period of time even after use in dusty conditions. और जिन गाड़ियों में मेन स्टैंड नहीं आता, ये सिर्फ साइड स्टैंड ही आता है, उनमें जो व्हील को स्पिन करने के लिए एक जी रोलर करके एक डिवाइस आता है। वो ग्रैंड पिट स्टॉप का भी आता है और किसी ब्रांड का भी आता होगा। मैंने वो जी रोलर भी अपने फ्रेंड से लेकर यूज किया था, लेकिन उसमें बहुत ताकत लगाना पड़ता है एंड दैट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। फिर मैंने मोटो जैक परचेज किया। मैंने नेट पे सर्च भी किया और सुना कि मोटो जैक थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और मैं ये आप देख भी सकते हैं कि मैं व्हील को आराम से स्पिन कर पा रहा हूँ, जबकि जी रोलर के साथ बहुत ताकत लगाना पड़ता है एंड इट इज़ वेरी टायरिंग टू व्हील द स्पिन विद द जी रोलर। So in that from that angle, from that point of view, the Moto Jack is more helpful. That is my verdict as well. ल्यू वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ हाउ टू डिसमेंटल इट, जस्ट हैव टू, इट इज दैट इजी। So I hope this video is helpful for you people. आगे भी वर्सेस के ऊपर वीडियो बनता रहेगा। रॉन्ग प्रोसेस। अभी तो 1 मंथ ही हुआ है ये गाड़ी लेने में। So it works, definitely it works. Thanks for watching. Goodbye until next video.